The topic for discussion is oxygen flux. So, the oxygen flux is the rate at which oxygen is transported to tissues, which means it is defining oxygen delivery and oxygen consumption. Before understanding what is oxygen delivery and consumption, first we have to know what is the oxygen content in the blood. So, first is the arterial oxygen content in the blood. It is the sum of the oxygen that is bound to hemoglobin and the oxygen which is dissolved in plasma. The arterial oxygen content of the blood is denoted with CaO₂ and it is measured in as ml of oxygen per deciliter. So CaO₂ or the arterial content of the blood is 1.34 times hemoglobin concentration times SaO₂ plus this is plasma constant times PaO₂. The normal value of CaO₂, which is the arterial oxygen content, is 20 ml of oxygen per deciliter. Similarly, we can also calculate what is the venous oxygen content of the blood. We use the same formula, that CvO₂ is equals to 1.34 times Hv concentration times SvO₂ plus the plasma constant, which is 0.03 times PaO₂. The normal value of the venous content of the oxygen is 15 ml of oxygen per deciliter. So, हमें यहाँ पता चल गया what is the arterial content and the venous content. Now we will discuss what is what we mean by delivery of oxygen. The delivery of oxygen is DO₂, which is ml per minute. It is the rate at which oxygen is transported from blood to microcirculation. It is calculated as the total arterial oxygen content times cardiac output. So, for instance, let's take the cardiac output normal value is 5 liter and we know the normal value of CaO₂ is 20 ml of oxygen per deciliter. By putting the equation and solving, we get the DO₂, which is delivery of oxygen, is 1000 ml per minute. After understanding what is oxygen delivery, now comes the third part in oxygen flux, which is called oxygen consumption. Oxygen consumption is the rate at which oxygen is utilized by the tissue. It is denoted as VO₂, which is measured by respirometer. Also, we can calculate it as the cardiac output multiplied by the difference between the arterial oxygen content minus the oxygen content in the venous blood. After consumption comes the last part of oxygen flux, that is oxygen extraction ratio. So, it is the slope of relationship between oxygen delivery and oxygen consumption. The proportion, or in other words, I can also say this, the proportion of oxygen that is removed from the blood. It is calculated as the arterial content of oxygen minus the venous content of oxygen divided by arterial content of oxygen. The normal value of oxygen extraction ratio is 0.25 to 0.3. हमने अब तक ऑक्सीजन कंटेंट देख लिया, ऑक्सीजन डिलीवरी देख ली, ऑक्सीजन कंजम्पशन देख लिया और ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन देख लिया। अब इन तीनों चारों चीजों का रिलेशन,
फर्स्ट इज जो हमारा कंजम्पशन है, दैट इज ऑक्सीजन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशियो. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज द ऑक्सीजन डिलीवरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशियो. अब इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. अगर मैं ऑक्सीजन डिलीवरी और एक्सट्रैक्शन रेशियो के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करूं और मैं देखूं कि जो हमारी ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो धीरे धीरे अगर बढ़ रही है, देख रहे हो, अगर 200 ml से 1000 ml पर मिनट तक जा रही है तो मेरा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशियो कम हो रहा है. 200 ml पे ये 0.35 था, 1000 ml पे ये ऑलमोस्ट 0.2 है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन रेशियो. तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है. दूसरी बात, एक चीज नोटिस करी होगी दैट ऑक्सीजन कंजम्पशन इज नियरली कांस्टेंट थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल ऑक्सीजन डिलीवरी. मतलब द ऑक्सीजन डिलीवरी एट विच द ऑक्सीजन कंजम्पशन टेंड्स टू फॉल. मतलब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में जो हमारा कंजम्पशन था वो नियरली कांस्टेंट था, बट ऑक्सीजन डिलीवरी एट विच द ऑक्सीजन कंजम्पशन टेंड्स टू फॉल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल ऑक्सीजन डिलीवरी. इसको भी एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. अगर मैं ऑक्सीजन कंजम्पशन और ऑक्सीजन डिलीवरी के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करूं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पॉइंट एट विच कंजम्पशन टेंड्स टू फॉल इज कॉल्ड एज द नॉर्मल क्रिटिकल ऑक्सीजन डिलीवरी. अब एग्जांपल लेते हैं एक पैथोलॉजिकल स्टेट का, जैसे कि सेप्सिस. तो सेप्सिस में हम सबको पता है जो कंजम्पशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हुआ और जो हमारा नॉर्मल क्रिटिकल ऑक्सीजन डिलीवरी पॉइंट था वो रिड्यूस हो गया. तो इस पॉइंट पे आके हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन टेंड्स टू फॉल इन केस ऑफ सेप्सिस. तो यहां पे ये फॉल होने लगा. तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो नया बनेगा ये पैथोलॉजिकल वैल्यू होगी फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी. थैंक यू.